Welcome back to another video. This video is related to no shortlisting, direct interview, direct test opportunity. There is no shortlisting. Believe me, बहुत बड़ी हायरिंग की जा रही है और in this video I am going to tell you about Capgemini, ETC, Hummingbird and NatWest and many more is there. But there is some in some opportunities there is shortlisting, but in some there is direct test opportunity. So watch video till end. Don't skip this hiring and please watch video till end. This is the warning for you. Big giant company is going on. So if you are a fresher, just watch video till end. And one more thing, just do subscribe my channel, like this video and please share my video as well. So new opportunities appear just announced. Associate software engineer role, Python location, Python role is there and 0 to 2 year of experience is needed. ठीक है, ये इसी मंथ पोस्ट की गई है और ये बहुत बड़ी हायरिंग कंडक्ट की गई है जिसमें पाइथन कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, डेटाबेस इज कंपलसरी एंड कंप्यूटर साइंस IT फंडामेंटल इज कंपलसरी. ओनली बेसिक नॉलेज इज कंपलसरी. ठीक है, बाकी जितना भी डार्क टेस्ट में लिखा है ये सब उठा के रेज्यूमे में ऐड करना है बिकॉज देयर इज शॉर्ट लिस्टिंग and these are the main thing you have to put in resume. Not all only GitHub, only React JS only and बस इतना कर सकते हो काफ़ी है. बाकी ये required skill और ये must have skill में तुम्हें ऐड करना है. So after updating resume you have to fill this form as soon as possible because your responsibilities is related to RESTful API, Python, Django, application development, code review, technical documentation. You have to create software enhancement, very basic level of domain because फ्रेशर के लिए है ना तो बहुत बेसिक है भाई, ये बहुत ही बेसिक लेवल का काम होने वाला है. तो अगर यहाँ पे शॉर्टलिस्टिंग करवानी है तो रेज्यूमे को अपडेट कर लो, डोमेन नीचे लिखे हैं एंड दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. यू हैव टू गेट द शॉर्टलिस्टिंग मेल. बट बिलीव मी बहुत ईजी होने वाला है, बस शॉर्टलिस्ट करवा लो अपना रेज्यूमे. जूनियर पाइथन डेवलपर रोल इज देयर एंड द आइडियल कैंडिडेट हु एंजॉय कोडिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड बिल्डिंग स्केलेबल बैकएंड सिस्टम. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, जस्ट हिट द अप्लाई बटन एज सून एज पॉसिबल. दिस इज नॉट अ नॉर्मल अपॉर्चुनिटी गाइज, प्लीज अप्लाई फॉर दिस. Now PTC is also announced the big bulk opportunity. Associate product analyst role is there and if you scroll down you can check BE, BTech in computer science, IT, mechanical, electronical branches is eligible and one more thing, 0 to 2 year of experience is needed in this and fresher with strong Java and database. One more thing, Java backend developer role is announced which is no shortlisting, direct test opportunity. I want to tell you in this video. Watch video till end. Fresher with Java and database knowledge is compulsory, which is must. You can check this and in-depth skills, operating system is compulsory and networking. If you want to skip this part, edit advantage you can skip, but please add this domain which is written here and you can easily read the responsibilities part also. And there is a job ID, you can take referral from LinkedIn. Pune location is there, but if you did not get any referral, come here and apply manually. So update your resume and hit the apply button. So Capgemini just announced the big opportunity. Software engineer role is there, but you can check experienced professional is eligible. Obviously experienced professional is eligible, but entry level is also eligible. If you see has a more than a year of relevant work experience, obviously fresher also can apply and experienced candidate also. But if you are a fresher, don't apply manually, just take referral as a fresher. ठीक है. And one more thing want to tell you अबाउट दिस कि यहाँ पर कभी कभी क्या होता है कि एंट्री लेवल भी हमें देखा मिलता है. ठीक है, यहाँ पे एक्सपीरियंस प्रोफेशनल लिखा है बट समटाइम्स यहाँ पे एंट्री लेवल को भी हायर किया जा सकता है. So please, if you have 0 to 2 3 year of experience, 1 year of experience, you can easily apply for this hiring. Before that you have to update your resume. If you are a fresher you can take refer, try to take reference. इसमें कोई पैसा तो लग नहीं रहा है, जाके एक बार ट्राई कर लो. मिल गया अगर रेफरल एज अ फ्रेशर, सो प्लीज कंप्लीट इट एज सुन एज पॉसिबल. सो Hummingbird टेक्नोलॉजी जावा डेवलपर, बैकएंड डेवलपर, बिग हायरिंग इज अनाउंस्ड, डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी. पुणे लोकेशन इज द 6 to 9 LP is the package. Scroll down, BE, BTech, ME, MTech, ME, BCA, MCA, MSc, BSc is eligible. All branches is eligible. 2026 batch is eligible. Stipend 30,000 per month. Duration of 6 months is there. And one more thing want to tell you, these are the main domain you have to put in resume: DSA, OPS, SQL and RESTful API. One more thing, Java तो यहाँ नीचे mention नहीं है but common sense है. Java backend then Java, Spring Boot, Hibernate, microservices is compulsory. What you have to do, just put all these domain which I told you. Please एक बार बैक करके देख लो कि मैंने क्या बोला है, जाके ऐड करो रेज्यूमे में and get the shortlisting mail. You can easily click on apply now. I am not eligible because I am not from 26 batch. So if you are eligible then book your slot as soon as possible. NatWest just announced data scientist role, Gurgaon.
गुरुग्राम लोकेशन इज a permanent full time hiring की जा रही है. Close date is today. You can check. Closing date of application is today and this is mass hiring going on. That's why they are closing very soon. तो आज बंद हो जाएगी 12 बजे तक का टाइम है. स्टेम डिसिप्लिन सारे एलिजिबल, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, आईटी, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एआईएमएल सारे एलिजिबल है. वन मोर थिंग वांट टू टेल यू कि इसमें क्या है क्या नहीं है. देखो पहली चीज समझो कि क्लाउड एप्लीकेशन और ये सब चीजें लिखी हैं तो ये तो ऐड कर ही दोगे, बहुत ईजी है. बट ऊपर आओ थोड़ा सा, यहाँ पर देख लो कि यू आर फाइनेंशियल सर्विस नॉलेज एंड इम्पैक्ट और वगैरह वगैरह लिखी, तो इसको भी स्किप करके ऊपर आ जाओ थोड़ा सा. यहाँ पर चीजें मिल जाएंगी जिसमें तुम्हें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ऑब्वियसली यू हैव टू पुट वन प्रोग्रामिंग, डेटाबेस, एजाइल मेथोडोलॉजी, एसडीएलसी, डेटा एनालिसिस, एक्सेल, पाइथन इज कंपलसरी, टेस्टिंग, मशीन learning models is there. So please put all these domain because if you are a data science field, देखो if you are from data scientist field then you know what to put in resume. Just put all these domain which is mentioned here, ठीक है, and get the shortlisting mail. These are the responsibilities, ठीक है. तो यहाँ पे चीज़ें लिखी हुई है, जाके ऐड करो. एंड वन मोर थिंग वांट टू टेल यू, दिस इज बेस्ड इन इंडिया और नॉर्मल वर्किंग डे, 5 डे वर्किंग, इवन वर्क फ्रॉम होम भी देंगे ये लोग तुमको. फुल टाइम अपॉर्चुनिटी है. लास्ट डेट इज टुडे. प्लीज अप्लाई एज सुन एज पॉसिबल. सो हिट द अप्लाई बटन. सो देयर इज 5 ऑफ कैंपस ड्राइव. आई ऑलरेडी टोल्ड यू दिस इज डायरेक्ट टेस्ट अपॉर्चुनिटी, नो शॉर्टलिस्टिंग. Capgemini software engineer role, take referral as a fresher. PTC big opportunity, already told you, take referral or either apply manually. And Zapra just announced as associate software engineer. So please hit the apply button. What I told you, what to put in resume, already told you. Go and apply it as soon as possible. Do subscribe my channel, like this video, and please watch your recent videos. Go to video section, check out the ad videos, and thanks for watching.